सो बताओ, सर्कुलर मोशन में हमने क्या सीखा था? यस, सर्कुलर मोशन में तो सबसे पहले एक सर्कल था. There was a circle, and then there was a particle that was moving. There was a particle which was moving along the circle. मतलब ये यहाँ पे सर्कल है और इसको ऐसा स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है, and then the particle is moving along the circle. So this is the circular motion. तो सर्कुलर मोशन में दो तीन चीजें जो हमने देखी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. पहली चीज ये, first point, that velocity of the object, v of the object, is always, ALWAYS, is always tangent to the path. मतलब जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो ये जो वेलोसिटी है वो हमेशा इस सर्कल के टेंजेंट में होगी. ठीक है. दूसरी चीज, second thing that we studied was that there has to be a force, okay, and this force is always directed towards the center. This force is directed towards the center. और इस फोर्स को हमने क्या बोला था? इस फोर्स को हमने बोला था सेंट्रीपेटल फोर्स. Okay, so this is the force which is always directed toward the center, and the velocity is along the tangent. So in short, we can say that in any circular motion, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. सो इन अ सर्कुलर मोशन, force is always perpendicular to velocity. ये चीज याद रखना. So there has to be a force which is in a direction perpendicular to the velocity, तो सर्कुलर मोशन होगा. अभी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है सर्कुलर मोशन में, दैट इज व्हाट इज द वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन बाय द फोर्स. ठीक है, तो वर्क डन का डेफिनेशन अभी तुम्हें पता नहीं पता है. वर्क डन इज F डॉट S. ठीक है ना, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. सो सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना कि फोर्स is always directed toward the center, and that force we call it as centripetal force, and this is the velocity, the object is moving in a direction which is perpendicular to the circle, so the displacement vector is perpendicular to the force, so the work done by the force is always zero. Which force? Work done by centripetal force. Centripetal force is always zero in a circular motion. ठीक है, ये दो तीन चीजें फटाफट जैसा नोट डाउन कर लो. तो ओके, तो सर्कुलर मोशन का हमने एग्जांपल्स क्या क्या देखे थे. सो द फर्स्ट वन वाज कि there is a ball or a stone or something which is tied in a rope, and this is the rope, and then ये rope को हम ऐसा गोल गोल घुमा रहे हैं. ठीक है. So अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुम बनाओगे, so you will see that there is a force which is directed toward the center, and by Newton's law, summation of all forces should be equals to m into a. So this force will produce an acceleration because these two are vector quantities.
this force, कौन सा force? This is centripetal force. Centripetal force will produce an acceleration. Okay, and this centripetal acceleration is given by F by N. So this acceleration is called centripetal acceleration. और ये हमने derive भी किया था कि the centripetal acceleration is equals to v square by r, where v is velocity of the object at this point. यहाँ पे v is the velocity of the object and r is radius of the circle. ठीक है? So circular motion में हमने ये भी देखा था कि there is something called as theta, which is angular displacement. यहाँ पे लिखता हूँ, theta is angular displacement. And then we discussed there is something called as omega. This is angular velocity, which is equals to angular displacement by time. And then we saw that there is something called as angular acceleration. So which is delta omega by delta t, that is rate of change of angular velocity. So there is a relation between linear velocity. Linear velocity means the velocity with which the object is moving along the circle. So that was v is equals to omega into r. ये याद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? V is the linear velocity and omega is the angular velocity and r is radius. So v is equals to omega into r. And ये जो angular acceleration है, ठीक है? So there is linear acceleration which is equals to v into r. तो इसको हम tangential acceleration भी बोलते हैं. V into r, this acceleration is called tangential acceleration. Sorry, not v into r. I'm extremely sorry. This is alpha into r. This is alpha into r. Okay, this acceleration is called tangential acceleration. Now why this is called tangential acceleration? Because जो velocity है ना, वो along the path tangent इधर change हो रही है. So ये वाले acceleration जो है, it will be directed along the path. So remember that there are two accelerations in play. One is this centripetal acceleration, which is directed toward the center. So अगर acceleration की बात करोगे, so if there is an object in circular motion, so there are two accelerations. One is directed toward the center. That's called normal acceleration, which is v square by r. And then there is tangential acceleration, at, which is perpendicular to the path. So tangential acceleration is alpha into r, or this is also equals to dv by dt. And then there is a normal acceleration which is directed towards the center, which is called centripetal acceleration. So this is centripetal acceleration. And this is tangential acceleration. Tangential acceleration. So in circular motion, there are two accelerations. One is the centripetal acceleration, or normal acceleration जिसको कहते हैं. This is also known as normal acceleration. And then we have tangential acceleration, which is in the direction of the tangent. Okay, so tangential acceleration, and that tangential acceleration is equals to alpha into r, where alpha is angular acceleration. Where alpha is angular acceleration. तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्या सबके? इसमें एक छोटा सा पॉइंट एक मैं और बताऊंगा. मान लो अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, सो व्हाट विल बी योर आंसर? बताओ. नेट acceleration. So it will be vector sum of these two accelerations, that is an and at.
ओके, सो जब वेक्टर सम करोगे तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया और फिर ये सेकेंड वेक्टर हो गया और ये रिजल्टेंट हो गया. सो ए नेट इज अंडर रूट ऑफ an square plus at square. Remember this. So the net acceleration is the vector sum of these two accelerations, that is tangential and normal. Always remember, हमेशा ये याद रखना. तो जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना, whenever we talk about UCM, so in uniform circular motion, in UCM, tangential acceleration is zero. The object is not accelerating, means alpha is zero. ठीक है ना, tangential acceleration is zero. So in UCM there is only normal acceleration or centripetal acceleration, that is v square by r. dv by dt is zero. So जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले तो ये चीज हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है और वहां पे केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होता है. Now I'll give you a question. The question is कि there is a pendulum bob. There is a pendulum bob and there is a pendulum bob. So ये तुम्हारा वर्टिकल है, ये पेंडुलम है, दिस इज लेंथ L and the mass is m. Now this is moving like this. ठीक है, this pendulum bob is moving like this. Now at an instant when this pendulum makes an angle theta from the vertical, ये angle तुम्हारा theta हो गया, ठीक है ना, from the vertical, the mass is m and the velocity of this bob is v. The velocity of this bob, pendulum bob, is v. ध्यान से सुनो. Calculate the tension in the string. समझ में आ रहा है क्या? At an instant when this pendulum is making an angle theta from the vertical, v is the velocity of the bob. Velocity of the bob. Okay. Calculate the tension in the string. Please try solving this question. So when this pendulum bob is making an angle theta from the vertical, okay, let's try to draw its free body diagram. तो ये अपना पेंडुलम बॉब हो गया and this is making an angle theta. तो पेंडुलम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ. यस, सबसे पहला फोर्स कौन सा लगेगा? mg. नीचे की तरफ mg लगेगा. कोई भी मास रहेगा ना तो उस पे mg तो लगने ही वाला है. and what is the direction of mg? It is vertically downward. ठीक है. और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? टेंशन, जो कि ये वाला स्ट्रिंग इसके ऊपर लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन. ये दो चीजें सबके समझ में आ रही हैं क्या? Is this clear to everyone? सब कोई चीज समझ में आ रही है? And the object is moving along this circular path. ठीक है, the object is moving along this circular path. ऐसा circular path के along move कर रहा है. तो circular में motion में हम क्या करेंगे ना, सारे forces को along this normal and along this tangent हमको split करना पड़ता है. उसका simple reason क्या है कि जो भी acceleration रहता है that is directed either directed toward the center or that acceleration is tangent to the path. So that's why we split all of the forces along the circle and tangent to the circle. ठीक है, if this angle is theta, this angle will also be theta and this angle will also be theta. So we'll split this mg in two parts. So this is mg cos theta and here it is mg sin theta and tension T इधर ही रहेगा along the ये. तो अभी ये जो mg sin theta है ना, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. यही वो फोर्स है जो कि इस पेंडुलम को इस डायरेक्शन में वापस पुल करेगा. पेंडुलम को कितना भी ऊपर जाने दो, उस पे ये अनबैलेंस फोर्स लग रहा है. सो दिस mg sin theta will pull the pendulum towards the center. Now let's talk about this.
let's talk about these two forces. So let me change the color. Let's talk about these two forces, that is tension and mg cos theta. तो circular motion में मैंने बताया है कि there has to be a force that needs to be directed towards the center, ठीक है. तो अब अगर यहाँ पे देखोगे, so there is a force, net force, and the net force should be directed towards the center, मतलब इस डायरेक्शन में. So the net force would be T minus mg cos theta. माइनस एम जी इसलिए क्योंकि टी का डायरेक्शन एम जी कॉस थीटा का डायरेक्शन अलग अलग है और हमें नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर लेना है. सो दिस फोर्स शुड बी इक्वल्स टू m into a. m is the mass and a is the normal acceleration of the centripetal acceleration. So this is the net centripetal force and this is the net centripetal acceleration, which implies t minus mg cos of theta is equals to m v square by r. So the tension is mv square by r plus mg cos theta. ये सबके समझ में आ रहा है क्या? तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या कि जैसे मान लो ये सेंटर है और ये एक बकेट है, ठीक है ना, बकेट में हमने पानी भर दिया है और ये पानी को गोल हमने ऐसा घुमा दिया, फिरा दिया है. तो अगर एक पर्टिकुलर जोर से स्पीड, मतलब ऑब्वियसली ये कनेक्टेड है, it can be a string or it can be your hand that you are holding the bucket and then ऐसा गोल वर्टिकल सर्कल में तुमने घुमाया है. तो अगर वेलोसिटी अच्छी खासी होगी तो पानी इसमें से नहीं गिरता है. देखा है तुमने? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वो रोलर कोस्टर है. देखो, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर सीन और नॉट. रोलर कोस्टर ऐसे जाता है, ऐसे गोल गोल घूमता है और फिर ऐसे नीचे आता है. तो रोलर कोस्टर की अगर सफिशिएंट वेलोसिटी रहेगी ना तो तुम यहां से ऐसे घूम करके नीचे आ जाओगे. कभी मौका मिले तो एसएल वर्ल्ड वगैरह जाके आना, वहां पे ऐसी राइड है, मिकी माउस राइड है वो. सो दीज टू आर लाइक मिकी माउस के जो दो ऐसा निकलते हैं ना ऊपर, वो वाले हैं. सो द रोलर कोस्टर टेक्स यू अप लाइक दिस एंड देन इट मूव्स लाइक दिस एंड देन अगेन अप एंड देन अगेन डाउन. तो अगर इफ यू हैव सफिशिएंट वेलोसिटी यू विल नेवर एवर फॉल डाउन और तुम ऐसा जा करके गोल घूम के आ जाओगे. बट अगर कम वेलोसिटी रहेगी तो तुम नीचे आ जाओगे. तो मेरा सवाल समझ में आ रहा है क्या? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू हैव अ बकेट एंड देन देयर इज अ वाटर इन द बकेट, ठीक है, और मैंने इसको जोर से वॉल किया, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r. So let's take the radius of the circle as r, ठीक है. Now the question is that what can be the minimum speed at the top? जब ये बकेट टॉप पे पहुंच गया है, मतलब इस केस की मैं बात कर रहा हूं, जब ये बकेट टॉप पे पहुंच गया है, so what should be the minimum speed that that the bucket must have at the top so that the water does not fall from the bucket? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? What should be the minimum speed of the bucket at the top so that the water from the bucket does not fall down? और फिर हम उसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे. ये यहाँ पे मिकी माउस पे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले जरा इसको देख लें. सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. तो अभी जैसे देखो, जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो ये बकेट के अंदर जो वाटर है, वाटर नहीं गिरना चाहिए. तो मान लो अपना ये वाटर है, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज द वाटर. नाउ व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस वाटर? बताओ. सबसे पहला फोर्स क्या रहेगा? mg रहेगा. और कौन सा फोर्स रहने वाला बताओ? नॉर्मल रिएक्शन. तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाटर पे लगेगा, तो ये मैं जो बकेट है ना, बकेट को मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं. देखो बकेट ये यहाँ पे रहेगा और वाटर बकेट के अंदर रहेगा, ठीक है. तो इसके बीच में कुछ कांटेक्ट होना चाहिए. अगर बकेट और वाटर के बीच में कांटेक्ट नहीं है ना, if there is no contact between any two surfaces, then the normal reaction will be zero. Remember this. So there has to be some normal force that is applied by the bucket on the water, तो ही ये water bucket के contact में रहेगा. This is very important.
Okay. So now this force which is directed towards the center must provide the centripetal acceleration. ठीक है? So which means that n plus mg should be equal to mv square by r. अभी अपने से पूछा मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है ना? तो राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी की टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज नो वेलोसिटी. सो रिमेंबर दैट अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो मुझे इसको भी मिनिमम करना ही पड़ेगा. ठीक है? अगर अपने को राइट हैंड साइड पे मिनिमम करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी मिनिमम करना पड़ेगा. व्हाट इट मींस इज दैट इन लिमिटिंग केस this normal reaction will be approximately equal to 0. This will be in limiting case. Limiting case का मतलब just जब water fall होने वाला रहेगा, so this normal reaction would be equal to 0. So when normal reaction is equal to 0, so this is 0 plus mg, which is equals to mv square by r. mm gets cancelled. We get g into r is equals to v square. So the minimum velocity that's needed is root gr at the top, so that the water does not fall. Water from the bucket does not fall. समझ में आया क्या? हेलो, समझ में आया क्या? सर वो लिमिटिंग केस का एक बार वापस बताइए ना. हाँ, लिमिटिंग केस का मतलब क्या है कि जैसे देखो नॉर्मल उस पर लगना ही चाहिए, ठीक है? तो अभी क्या है कि वेलोसिटी अपने को मिनिमम करना है. ये वाली टर्म देखो, look at this expression. I want velocity to be minimum. That's what the question is. What should be the minimum velocity with which the bucket must be ऐसा whirled, turned यहाँ पे, so that the water does not fall. तो अब अगर मुझे वेलोसिटी मिनिमम चाहिए तो राइट हैंड साइड वाली टर्म भी मिनिमम हो जाएगी. मिनिमम फॉर मिनिमम वेलोसिटी. समझ में आया? अब अगर राइट हैंड साइड वाली टर्म मिनिमम होगी तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म भी मिनिमम ही करनी पड़ेगी अपने को. अभी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म में mg को तो हम कम नहीं कर सकते, बिकॉज mg इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द वाटर. तो ले दे के बचा नॉर्मल रिएक्शन. अब ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स है? सो नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बकेट ऑन द वाटर. अब अगर ये नॉर्मल फोर्स मान लो 10⁻⁻10 न्यूटन का भी हो जाए तो भी अपना काम हो जाएगा ना, पानी नीचे नहीं गिरेगा. मतलब ये फोर्स बहुत कम है लेकिन है, इट्स नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज वेरी क्लोज टू 0, 10⁻10. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई कैन से दैट हम n को मिनिमम कर सकते हैं बट नॉट इक्वल टू 0. आई मीन वी कैन this target n to be very less but not equal to 0. So वही मैं लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूँ कि 10 नॉर्मल की वैल्यू could be 10⁻10 न्यूटन और somewhere around that रहेगी. So ये नॉर्मल रिएक्शन जब रहेगा 10⁻10 or probably very less, then this normal reaction would be equal to 0, and then mg is equals to mv square by r. mm gets cancelled and v square is equals to rg and v is equals to under root of gr. समझा? Now the second part of this question, the question is नीचे, अभी देखो दो पोजीशंस हैं, एक नीचे वाली पोजीशन है और एक ऊपर वाली पोजीशन है, ठीक है ना? So let's call this as position A, this is position B. What is the normal reaction applied by the bucket on the water in position A if the bucket has this velocity जो कि हमने कैलकुलेट की है at A. I'll write it down. Calculate the reaction at A. A पे reaction लगाओ if the bucket is moving with velocity v that is equals to under root of gr. Please try it out. So simple, the net force should be the normal upward direction, नीचे mg लगेगा, so n minus mg is equals to mv square by r. ठीक है?
So from here we get n is equals to mg plus mb square by यहाँ पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. देखो यहाँ पे प्लस हो गया है. So v is equals to root gr. Now put this value here. So root gr का whole square we get gr. Rr gets cancelled, so it's mg, so it's 2 mg. So this is the normal reaction. So the normal reaction applied by the bucket on the water is 2 mg. Next question देखो. एक ऐसा वर्टिकल रॉड है. This is connected to a horizontal rod. And the length of the rod is L. And then it is connected to a string of length L, and the mass is M. And this whole rod is rotated by an angular velocity omega. And this string makes an angle theta from the vertical. Question ध्यान से सुनना, ठीक है? So the given case is that there is a rod of length L, and then there is a string of length L, then there is a mass M, and it's moved, it's rotated with an angular velocity omega such that this string makes an angle theta from the vertical. Okay? Find the value of omega. The question is that find the value of omega in terms of theta, M, and L. Okay? Try karo. Plus this length. Now how much is this length? तो वो यहाँ से अपन देखेंगे. This is L and this is theta. So this is L cos theta and this is L sin theta. So this length is nothing but L sin theta. Okay. So this is L and this is L sin theta. So this R is L plus L sin theta. L bahar nikal lo. So this is 1 plus sin theta. 1 plus sin theta. Okay. So अब अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, सो दिस मास इज नॉट मूविंग अलोंग वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस के अलोंग कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है. सो आई कैन इजीली से दैट समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई इज इक्वल टू 0, which implies T of cos theta is equals to mg. This is equation number 1. And equation number 2 would be that there has to be a force directed towards the center. कोई ना कोई फोर्स तो होना ही चाहिए ना डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. तो वो फोर्स कौन सा है? तो वो फोर्स ये है, T sin theta. So T of sin theta is equals to mv square by r. Okay. T of sin theta is equals to mv square by r, which is T of sin theta is equals to mv square by, now r is nothing but L into 1 plus sin theta. Okay. So that's equation number 1 and this is equation number 2. So when you divide 2 by 1, we get T sin theta by T cos theta, that is tan of theta. ये दिख रहा है ना? इसको अगर डिवाइड करोगे 2 को 1 से तो it will be like this. T sin theta by T cos theta is equal to mv square by L into 1 plus sin theta upon mv square by r. So ये mv square cancel out हो रहा है. सॉरी, क्या कर रहा हूँ यार मैं? सॉरी एक सेकेंड ना. mg है ये नीचे. This is mg. mm gets cancelled. So and here tt gets cancelled. So this implies sin theta by cos theta is tan of theta is equals to v square. अपने को निकालना है ओमेगा.
अपने को निकालना है ओमेगा। सो ओमेगा निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं पता है कि ठीक है चलो ओमेगा बाद में निकाल, पहले बी निकाल लेते हैं। नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं देन। सो व्हाट वी कैन से इज दैट mv स्क्वायर बाय r इज, यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं लिखा है, चलो नहीं लिखा तो यहाँ पे बता देता हूँ। mv square by r is equals to mv. Now v is equals to r into omega. V is equals to r into omega, which is equals to m r square omega square by r. So ये r gets cancelled. So this is m r omega square, और m omega square r भी बोलते हैं कभी कभी इसको, ठीक है। सो सिमिलरली इसको मैं अगर अपने को ओमेगा निकालना है, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज m omega square r, which is L into 1 plus sin theta. Okay, which is L into 1 plus sin theta. ठीक है, तो let's erase this. So when you divide second को first से, we get this is the second one and that's the first one, so it will be t sin theta by t cos theta is equal to m omega square L into 1 plus sin theta by mg. mm gets cancelled here, tt gets cancelled, so sin theta by cos theta is equals to tan of theta is equals to omega square L by g into 1 plus sin theta. तो अपने को निकालना है ओमेगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी g of tan theta by L into 1 plus sin theta is equal to omega square. So omega becomes under root of this whole thing, that is g tan theta by L into 1 plus sin theta. ये समझ में आ रहा है क्या सबको? कभी कार घुमाया है क्या सर्कुलर ट्रैक पे? कार on a circular track. So what actually happens here is, ऊपर से देखो तो ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे मस्त पे की कार है तुम्हारी, which is moving in a circle. Let's say the radius is r. Now what do you think, which all forces are acting on the car when the car is moving in a circular track? बताओ, और वो कौन सा फोर्स है जो इस कार को सेंटर की तरफ लगा रहा है, कार पे सेंटर की तरफ लगा रहा है? बिकॉज इफ समथिंग हैज टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, अगर किसी चीज को सर्कुलर मोशन में जाना है तो समथिंग इज मूविंग लाइक दिस, so there has to be a force acting towards the center. There has to be a force. Now which force is this? बताओ ये कौन सा फोर्स है which is acting toward the center? Friction. फ्रिक्शन, वेरी गुड, फ्रिक्शन। तो कभी कभी देखे होगे जब भी ट्रैक्स वगैरह पे जब भी ऐसा मोड़ रहता है ऐसा ट्रैक पे, ओके, और गाड़ियां हमेशा इधर जाती हैं और इधर पड़ी हुई मिलती हैं ट्रैक के बाजू में, तो अगर ऐसा ट्रैक रहेगा तो गाड़ियां इधर जाएंगी, और अगर मान लो टर्न ऐसा है तो हमेशा गाड़ी इधर पलटती है। तो उसका रीजन क्या होता है? अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन है so the friction will hold the car, you know, and if there is no friction then you won't be able to hold the car, और कार के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लग पाएगा तो कार एकदम सीधी निकल जाएगी।
और सीधी निकलेगी तो इधर जाकर के टॉपल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? सो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि टर्निंग पे धीरे धीरे चलाओ, स्लो चलाओ, बिकॉज स्लो चलाओगे ना तो फ्रिक्शन वुड बी एबल टू प्रोवाइड दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ अब अगर स्पीड तुमने बहुत ज्यादा कर दी कॉर्नर पे तो friction force won't be able to provide that centripetal acceleration, and because of this what will happen is that your car will topple. Okay, तो अब अगर यहाँ पे देखोगे ना तो क्या हो रहा है कि दिस इज अ कार। अब कार पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ये मान लो दो पहिए हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू में बना रहा हूं और ये तुम्हारी रोड है। तो कार पे जो सबसे पहला वाला फोर्स लग रहा है वो तो mg है। समझ में आ रहा है क्या? और कौन सा फोर्स लग रहा है कार पे? नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है कार पे? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स द फ्रिक्शनल फोर्स। ये बात समझी क्या? सबको समझ में आई क्या? हेलो? यस इसके सर। अलावा Yes, कार sir. पे कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो देखो यहाँ पे, अगर ये तुम्हारी कार है ना, ये पहिए हैं उसके, कार के नीचे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है Fr. Okay. Now, since there is no motion along y, I can safely say that summation of all forces along y is 0, which implies normal reaction is equal to mg. And the force which is, excuse me, the force which is acting toward the center is the frictional force, and the maximum value of frictional force would be mu into it, because अपने को maximum velocity चाहिए, तो frictional force भी maximum अपने को लगाना पड़ेगा, that is mu times mg, because n is equal to mg. And this frictional force will provide centripetal acceleration, and the equation of the motion would be that net force is equals to mv square by r, where r is the radius of the track. So from here we get mu times mg is equals to mv square by r. mm gets cancelled, so mu times g into r is equal to v square. So velocity is equals to under root of mu gr. ये maximum velocity हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? Because this force, अभी देखो, अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ना, अंडरस्टैंड इट, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स एंड राइट हैंड साइड पे है mv स्क्वायर बाई r। तो ये वेलोसिटी अगर तुम बढ़ाते गए और अगर फ्रिक्शनल फोर्स उस वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं कर पाया तो तुम्हारी कार स्किड हो जाएगी, ठीक है? सो लिमिटिंग केस में क्या होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, because the moment mv square by r is greater than friction force won't be able to support the car. ये बात समझ में आ रही है क्या? तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि what should be the maximum value of coefficient of friction. So in that case ये वाला जो फॉर्मूला है, so mu g is equals to v square by r. So the maximum value of coefficient of friction required to support this speed is v square by r g. v square by r g. ठीक है? तो please note down this. I'll give you 2 minutes. More speed. इतनी स्पीड सफिशिएंट नहीं रहती, कभी कभी वी नीड मोर स्पीड, बिकॉज अभी हाईवेज तो बड़े बड़े हो गए हैं, चौड़े चौड़े हो गए हैं, तो केवल फ्रिक्शन पे हम रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट हम थोड़ा सा रोड में चेंजेस करते हैं, एंड दैट चेंज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। क्या बोलते हैं हम उसको? बैंकिंग, BAN। आई डोंट नो, थोड़ा अच्छे से लिख नहीं रहा है मेरा ये बोल। बैंकिंग, banking of road,
कभी सुना है बैंकिंग ऑफ द रोड के बारे में? हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म बैंकिंग ऑफ द रोड? यस। बैंकिंग ऑफ द रोड क्या रहता है ना कि जहां पे भी टर्न रहता है, अभी जैसे आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑब्जर्व दिस और नॉट, जब भी तुम कोथरूड से हिंजवाड़ी की तरफ जाओगे ना, सो देयर इज अ ह्यूज टर्न, एक बड़ा सा टर्न है। वहां पे जो रोड है ना, यूजुअली रोड ऐसा हॉरिजॉन्टल रहती है। बैंकिंग ऑफ द रोड में रोड ही थोड़ी सी टर्निंग की रहेगी, इंक्लाइंड रहेगी रोड। सो द रोड दिस टर्न, ये जैसे मानो बड़ा सा सर्कल है, सो ये रोड ऐसे आएगी और ये रोड ऐसे चली जाएगी इंक्लाइन होते हुए। समझ में आ रहा है क्या? Yes, दिस इज sir. द रोड। सो द रोड इज नॉट हॉरिजॉन्टल, रोड थोड़ा सा इंक्लाइन हो गई है। आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? Yes, sir. मैं 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करता हूं, इफ यू कैन सी दैट। यस, कैन यू सी मी? क्या रहता है कि ये मेरा मोबाइल फोन है, लेट्स से दिस इज द रोड, ओके, एंड अ कार इज कमिंग एंड इज टर्निंग लाइक दिस, ऐसे करके कार जा रही है, ठीक है ना। बैंकिंग ऑफ द रोड में क्या होगा? द रोड इज नॉट हॉरिजॉन्टल, द रोड इज स्लाइटली टिल्टेड, तो कार ऐसे आएगी और ऐसे होके चली जाएगी। सो यू मस्ट हैव इट सीन कि जहां पे रेसिंग वगैरह होता है ना, वहां पे द रोड इज नॉट ऐसा Yes, sir. F1 हॉरिजॉन्टल, tracks are like इट इज that. स्लाइटली इंक्लाइंड, मींस द कार कम्स लाइक दिस एंड देन द कार गोज लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? There's a big circle that the car takes like this. So the car comes and then ऐसा incline पे ऐसा कार जाती है and then it goes like this. Normal हम रोड पे कैसे चलाते हैं? हम सीधा चलाते हैं, ठीक है? Because the roads are horizontal. अपनी सिटी की roads, they are all horizontal, parallel to the ground. So the car goes like this. But if you are racing, if you see the racetrack, there is a slightly ऐसा the road is inclined, so the car comes and then it goes like this. समझ में आया क्या? So that is called banking of the road. विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Good. So what actually happens in banking of the road? So in banking में ना, थोड़ा सा एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। ये रोड है एंड द कार के ये पहिए हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं डायग्राम बनाता हूं तो लोग क्या सोचते हैं कि द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नो, द कार इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द कार इज मूविंग अलोंग दिस। समझ में आ रहा है ना? इट इज मूविंग अलोंग द ट्रैक, the car is not moving along the inclined plane, ठीक है? Yes. ओके। सो अब अगर मान लो कि ये बैंकिंग का एंगल थीटा है, सो व्हाट डू यू थिंक आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द कार? बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, फटाफट बताते चलो। यस, सबसे पहला फोर्स कौन सा लगेगा? MG. वेरी गुड। और क्या लगेगा? Normal. नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और क्या लगेगा? Friction. फ्रिक्शन। बट फ्रिक्शन किधर लगेगा? जैसा कि मैंने बताया तुम्हें, देखो जब भी स्पीड हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं ना, तो कार का ट्रैक छोड़ने का टेंडेंसी रहता है। कार तो ऑलवेज ट्राइज टू मूव अहेड, दूर की तरफ। सो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, अलोंग द पाथ टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ पे भी अभी जैसे मान लो ये है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगेगा, ठीक है, क्योंकि यही कॉन्टैक्ट सरफेस है। दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस। सो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। सो द फ्रिक्शनल फोर्स ये अलोंग द सरफेस लगने वाला। दिस इज द एफ। ये समझा क्या सबको?
ठीक है, तो अब मैं जरा सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। सर बट फ्रिक्शन तो हमेशा मतलब मोशन के अपोजिट होता है ना, और मोशन की टेंडेंसी तो डाउन है, तो फ्रिक्शन भी वही साइड में कैसे हुआ? फ्रिक्शन यहाँ पे भी मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना तो गाड़ी पलट जाएगी उल्टे डायरेक्शन में। वही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर से बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये कार ऐसे जा रही है बराबर। अगर फ्रिक्शन इसको होल्ड इधर नहीं करेगा ना तो कार ऐसे चली जाएगी, मतलब सीधे आगे जा करके बाहर निकल जाएगी। सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा ना फ्रिक्शन, जहाँ जो मोशन में जो कार जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में? अभी क्या है कि जब हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उसमें एक केस होता है प्योर रोलिंग करके। वो अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्हील, ये व्हील है, परफेक्टली रोलिंग कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है ना, स्किड नहीं हो रहा है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस। फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो सर्फेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो जब ये रिलेटिव मोशन नहीं है, व्हेन देयर इज केस ऑफ प्योर रोलिंग, एकदम ये जो टायर है सरफेस के ऊपर प्योर रोल करे, जो कि आइडियल केस है, जो होता नहीं है, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ टायर जो कि परफेक्टली रोल कर रहा है सरफेस के ऊपर। उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स 0 लगता है। यहाँ पे इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन प्योर, एक सेकेंड है यार, आज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसे लिख नहीं रहा है। इन प्योर PURE रोलिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। फ्रिक्शनल फोर्स किसके किसके बीच में? बिटवीन द टायर एंड द सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। ये बात समझ में आ रही है क्या? अभी नहीं समझ में आएगी। ये हम कब पढ़ेंगे? तो जब रिजिड बॉडी जब हम पढ़ेंगे ना, उस समय मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है। अभी आज नहीं समझ में आएगा तुमको, ठीक है। सो जो तुम बोल रहे हो एकदम सही है तुम्हारा सोचना कि सर ये कार इधर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आइडियल कंडीशन में अज्यूम कर रहा हूं, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज कार तभी चलती है जब उसके टायर्स परफेक्टली रोल होते हैं। सो इन केस ऑफ परफेक्ट रोलिंग देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब जैसे मान लो कि एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है और ब्लॉक को मैं इधर खींच रहा हूँ, सो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस वजह से फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, फ्रिक्शन कब लगेगा? जैसे मान लो कि ये व्हील रोटेट कर रहा है, इसको मैंने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगा दिया तो अब ये रोल नहीं हो रहा है। अब अगर इसको मैं खींचूंगा ना तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो वही एक्चुअली टायर मार्क्स हमको रोड पे दिखते हैं। जब भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ रहता है, जोर से ब्रेक लगाया, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और कभी भी व्हीकल को अगर तुम टर्न होते हुए देखोगे ना, तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक तरफ का सस्पेंशन झुका हुआ रहता है, एक तरफ का सस्पेंशन उठा हुआ रहता है। I'm talking about four wheelers. Whenever you take a turn, so why this happens? Because of the friction. Friction is always trying to pull this towards the center. So in circular motion, friction force हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। ओके। और ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है कि सर टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स 0 होता है, अभी केवल मैं बोल रहा हूं इसलिए लिख के ले लो। इसका एक्सप्लेनेशन रिजिड बॉडी करके रहता है 12th स्टैंडर्ड में, वहां पे मैं दूंगा। ओके, यस सर। okay, now let's try to understand what is banking of the road. So यहाँ पे as we discussed, so this is going to be the normal reaction. This is the normal reaction. This is mg and here it is friction Fr. So अब अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, सो ये भी थीटा ही रहने वाला है। सो mg के दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक हो जाएगा mg cos थीटा
और दूसरा हो जाएगा mg, अरे यार पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, नाउ सिंस देयर इज नो मोशन अलोंग दिस लाइन, ठीक है, since there is no motion along this line, so n will be equals to mg cos theta। y एक्सिस के along कोई मोशन हो रहा है क्या? यहाँ पे अगर देखोगे तो y एक्सिस के along कोई मोशन हो रहा है क्या? एनीवन? नहीं हो रहा है, तो summation of all forces along y is equal to 0, so I can say that n is equal to mg cos थीटा। अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, I'll take you to another screen। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कार है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये अपना रोड हो गया, बट द कार इज रोटेटिंग अबाउट सम सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं तुमको कि देयर हैज टू बी सम फोर्स। अब यहाँ पे तो मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है ना, इस केस में मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? लेट्स से अज्यूम करो कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, म्यू इज 0, देयर इज नो फ्रिक्शन, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट ये नॉर्मल रिएक्शन है, सो नॉर्मल रिएक्शन का, और ये नीचे mg है, so normal reaction को you will have to split it in two components। if this angle is theta, okay, ये पैरेलल कर दिया, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ओके, तो फिर ये वाला एंगल थीटा होगा, so this angle will be theta, so here this is n cos theta and this is n sin theta, so there has to be a force which is directed towards the center, एंड ये यहाँ पे ये y कंपोनेंट है, ठीक है ना, तो n cos theta will balance summation of all forces along y equals to 0, so n cos theta will balance your mg, and this force summation of all forces along x, that is equals to m into a, this is the centripetal acceleration, so n sin theta will provide the necessary centripetal acceleration, that is m into v square by r। so ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, so what I'm going to do is 2 divided by 1, which implies, so 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो sin by cos हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा, n भी रहने वाला है, n ऊपर n नीचे, बट ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, and then यहाँ पे we get mv square by r upon mg, m gets cancelled, so from here we get tan of theta is equals to v square by rg। so if there is no friction, कि भाई फ्रिक्शन रहेगा तो मान लो हम और वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, बट अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, so the banking of the road should be such that tan theta is equals to v square by rg, so this theta is called angle of banking, theta is the angle of banking। समझ में आ रहा है?